Okay, we are on to question number 36 और question number 36 का part A है. The potential difference across the two ends of a circuit component is decreased to one third of its initial value while its resistance remains constant. So resistance constant है, potential difference की value जो है वो one third हो जाती है. तो what change will be observed in the current flowing through it? So this is question number 38 part A का first part है. और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस डिक्रीज टू वन थर्ड इट्स वैल्यू. तो हमें पता है और हमसे पूछा है चेंज इन करंट. तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर. तो यहाँ से करंट निकलेगा V I इज इक्वल टू V बाई आर. इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीज टू वन थर्ड इट्स इनिशियल वैल्यू. सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीज्ड टू वन थर्ड. So potential difference is decreased to one third of its initial value. So this is one third of its its initial value. तो हम नई potential difference बना लेते हैं V dash. V dash होगी पहले वाली potential difference थी V, उसका one third. और हमसे पूछा है what change will be in the current. So हमें बाहर निकालना है नया करंट. तो नया करंट हो जाएगा I dash, वो हो जाएगा V dash. और रेजिस्टेंस जो है आपकी सेम है. V dash है आपका V बाय थ्री बाय आर. तो इसको हम लिख सकते हैं वन बाय थ्री V बाय आर. और ये V बाय आर है आपका ओरिजिनल करंट. सो ये है आपका ओरिजिनल करंट I. सो यहाँ लिख सकते हैं I. तो इसका मतलब है नया करंट हो जाएगा वन थर्ड ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. सो हम यहाँ लिख सकते हैं that new current will be one third of the original value. So current becomes one third of its initial value. So this current, we can say, it becomes one third of its initial value. और इसे हमने शो भी कर दिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एंड स्टेट द लॉ विच हेल्प्स टू आंसर दिस क्वेश्चन. और इसमें जो हमने लॉ यूज किया है वो है आपका ओम्स लॉ. सो our next answer should be, so this was our first answer, this is second answer is Ohm's law. You have to name that and you have to state that, means you have to explain that. And Ohm's law states that the potential difference across the ends of a conductor. So here we can write potential difference across the ends of a conductor is directly proportional. So that is directly proportional to the current flowing through it. So we can say that it's directly proportional to the current flowing through it, and condition is that temperature remains constant. So provided it's its temperature remains constant or temperature remains same. Okay, so we are done with this part. The next question says that we have to draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of four 1.5 volt cells. So we have this battery of four 1.5 volt cells. So we have four cells. This is one cell, this is second, this is third, and this is fourth. And each cell is of 1.4. So, and we have four cells. Though this is 6 volt battery. So we have 6 volt battery. And now we have to connect this. So we have to connect a battery, 5 ohm resistor,
a 10 ohm and 15 ohm resistor, and they are all connected in series and a plug key. So all these are connected in a series with a key. So we have three resistors that are to be connected in series, and these are, the first resistor is the 5 ohm resistor. Then second is the 10 ohm resistor. They are connected in series. That means that ends are connected end to end. So second is the 10 ohm, and the third one is the 15 ohm resistor. They are connected end to end, and they are connected with a battery. So let's connect a battery here in the closed state. So ये बैटरी है closed, सॉरी ये की है closed, और ये बन गया आपका schematic diagram, और यही सब हमें इसमें कनेक्ट करना था. So current flows in this direction, I. So this is the direction of the flow of the current with a key and three resistors 5, 10 and 15 ohm. Okay, now let's read out. आगे पढ़ते हैं. And now find the electric current passing through the circuit and the potential difference across the 10 ohm resistor only when the key is closed. So we have to find the current, और करंट निकालने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. ये कनेक्टेड है सीरीज में, तो सीरीज में हम रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंसेस को करते हैं +5 +10 +15, which is 30 ohm is the net resistance. और हमें फाइंड आउट करना है करंट. तो आपका V है 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट होता है V बाय R. तो दिस इज 6/30, which is equal to 1/5, and that is equal to 0.2 ampere. So 0.2 ampere is the current in the circuit. अब हमें फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर. सो 10 ओम रजिस्टर है ये, इसके क्रॉस निकालनी है हमें पोटेंशियल डिफरेंस. तो 10 ओम रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब करंट जो है सभी रजिस्टर्स में जो है करंट जो है सेम रहेगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है सीरीज में, और जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो सब में करंट सेम रहता है. तो हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हम निकालनी है 10 ओम. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम में रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है, उसमें करंट जो जाएगा वो 0.2 एम्पियर है, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई इंटू आर, जो कि है 0.2 इंटू 10, विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट. तो 2 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस जो है फ्लो करेगी across 10 ohm resistor. Okay, when the key is closed. Now let's move on to OR. What is the potential difference between 2 points said to be 1 volt? So now we are attempting OR part. This is B's first part. और हमसे पूछा है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है I इंटू आर. जब करंट 1 एम्पियर हो जाएगा और रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1 वोल्ट. So this is 1 ampere into 1 ohm. And we can write, or in terms of, if we have to write it in terms of the work done, we can also write it as, we know that V is equal to W by Q. So when work done is 1 joule and work done is 1 joule, charge is 1 coulomb, we can say that it becomes 1 volt. So when 1 joule of work is done, you from one point to the other,
और भेजो रोटी नहीं खाई है बच्चे ने potential difference is said to be 1 volt जा रहा है आज से ज्यादा आ रहा है ना छुट्टी करो शाम को okay for next question it's given a copper wire has a diameter of 0.2 mm so we are attempting the second part so this has a diameter of 2 mm and so this has a diameter of 2 mm. So 2 mm is not the SI unit. That means we have to convert it into meter. And to convert it into meter, let's multiply it with 10 raised power minus 3. So this becomes diameter is now 0.2 into 10 raised power minus 3 meter. And let's find out the radius. So radius is 0.2 into 10 raised power minus 3 divided by 2 meter, which is zero point 0.1. So R is equal to 0.1 into 10 raised power minus 3 meter. Now 0.1 I can write it as 1 by 10 into 10 raised power minus 3 which becomes radius is now equal to 10 raised power minus 4 meters. So this is the radius. Okay, moving, let's read the question further. It says that it has a resistivity of, so resistivity is given. And resistivity has the symbol rho, resistivity का symbol है और ये है 1.6 into 10 raised power minus 8 ohm meter. ये है resistivity. So what will the length of the wire to make its resistance 14 ohm? आपको resistance चाहिए 14 ohm करनी है आपने और कितनी लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड होएगी तो रेजिस्टेंस है 14 ओम और हमें पता है we know that the resistance of the wire so now the resistance of the wire is given by rho into L by A इसको हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये है R into A is equal to rho into L और L हो जाएगा R into A by rho इसमें पुट इन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू 14 ओम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई इंटू आर स्क्वायर और रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 80 इसमें वैल्यू पुट करेंगे 14 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 रेडियस है 10 रेज पावर माइनस 4 का स्क्वायर और ये है 1.6 into 10 raised power minus 8 7 2 is 14 so this is equal to 44 into 10 raised power minus 4 का square है 10 raised power minus 8 upon 1.6 into 10 raised power minus 8 this gets cancelled so we have 44 to 40 by 16 और ये 4 से हो जाएगा cancel this is 110 where 2 2s are 4 2 5s are 10 2 5s are 10 so 55 by 2 55 by 2 means this is 2 2s are 4 2 7s are 14 27.7 meter is the length of the wire so length of the wire है 27.5 meter okay again next what is given in the question में next दिया है so what will the length of the wire हमने find out कर लिया how much does the resistance change if the diameter of the wire is doubled now the diameter डबल हो गई है डायमीटर डबल हो गई है इसका मतलब रेडियस भी डबल हो जाएगी बिकॉज डायमीटर ये नई डायमीटर है तो नई रेडियस हो जाएगी 2r डैश 2 इन डी आर होता है 2r तो इसका मतलब रेडियस भी आपकी डबल है तो आपसे पूछा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज तो अब हम निकालेंगे रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी तो हमें पता है रेजिस्टेंस होता है रो इंटू एल बाय ए तो आपकी रेजिस्टेंस पहले आपको दे रखी है 14 ये है 14 ओम जब आपकी लेंथ जो है 27.5 मीटर है तो ये रेजिस्टेंस है अब नई रेजिस्टेंस जो हो जाएगी वो रेजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी लेंथ जो है वो
उतनी ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा पाई, ये आर डैश नई रेडियस, तो ये हो जाएगा रो इंटू एल, और दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो जाएगा पाई इंटू आर डैश, नई रेडियस है 2r, तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं रो इंटू एल अपॉन पाई, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सो 4 पाई आर स्क्वायर, सो दिस इज 1/4, 1/4 रो एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ये है आपकी 14 ओम, पहले थी 14, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 14, दिस इज 27, और ये हो जाएगी 3.5 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो चेंज कितना है? so change in resistance, so what will be the change in resistance? so change का मतलब है जो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करना, फाइनल रेजिस्टेंस है 3.5, लेट्स फाइंड आउट द चेंज, क्योंकि r बड़ा है तो दिस इज 1 माइनस r डैश, ये कम हो गया तो 14 माइनस है 3.5, so 14 minus 3.5 हो जाएगा 11.5, so that will be the change, so 14 minus 3.5, sorry, 14 minus 3.5 हो जाएगा आपका 10.5, so 10.5 ohm is the change in resistance. We have to subtract 40 from 3.5, this is 5 and 10.5, so 10.5 जो है change है, क्योंकि इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा है और वो थी आपकी 14, ये आपको पहले दे रखी है, और वो होती है रो इंटू एल बाई ए। फिर हमने निकाली नई रेजिस्टेंस नई रेडियस डाल के, और जब हमने कैलकुलेट किया तो वो आई 3.5, क्योंकि ये जो है ये आपका 14 ओम है, सो दिस इज एक्चुअली रो एल बाय पाई आर स्क्वायर इज ए, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह ए भी लिख सकता हूँ, इसको आप लिख सकते हो 1/4 इंटू रो एल बाई ए, ये जो है ये आपका 14 है, तो इसकी जगह मैंने 14 डाल दिया, 3.5 आ गया, और ये थी आपकी चेंज इन रेजिस्टेंस। और इसके साथ ही हमने कंप्लीट कर दिया है ये क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।